Assalamu alaikum everyone. I'm once again here, Miss Sana Wasim from Scholar Online Academy. Okay, today we will discuss about Love and Divine poem by John Donne. John Donne is very famous writer and at the age of the knowledge and the wisdom, and he shows their influences of the age of the Renaissance. And he was the man of the Renaissance, love for wisdom, love for knowledge, wise man, intellectual person, and scholastic person. So he was very famous at the period of the age of the Renaissance. So now we are going to discuss his famous poem, The Anniversaries. This is a very much famous poem. First of all, I'm going to read this introduction. I'm going to give you Urdu detail too. Look at this. This one is Nazam ka Taruf. You can read easily and you can understand very in a very easy way. But first of all, I'm going to read the about the introductions of this poem. कि इस poem में जॉन डन ने क्या कहा है. This poem is about Dunn Sweet's marital life कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में थी ये. It was written to celebrate the first anniversary of his marriage with the Anniversarie. He reminds his beloved like wife that today is the first anniversary of their first meeting. And he says that everything declines with the passage of time. But अब देखिए हर चीज़ विद द पैसेज ऑफ द टाइम हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, बट एक चीज़ जो हमेशा एवर लास्टिंग जिंदा रहती है वो क्या है? दैट इज़ अ लव. सो बट देयर लव इज़ एवर लास्टिंग बिकॉज इट इज़ नॉट अ स्लेव टू टाइम, यानी कि वो कोई वक्त का मोहताज नहीं है, कोई ग़ुलाम नहीं है. He wishes that after their death, if they are buried to one grave, it will be impossible even for the dead to separate them. कि अगर एक ही उसको कब्र में दफनाया जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं कि उनको कोई अलग कर सकते हैं. It's mean here we can see the great love, the passionate of the love of the side of from the side of the writer John Donne, and it is basically dramatical lyric in which the poet celebrate his love, which is now 1 year ago, and the poet is a speaker and his beloved is a listener. So, the central theme I already mentioned here, the central theme is the immortality of true love, which transcends death itself. You can also write these lines. It's very effective whenever you get a chance to write the reference to context and the explanation. So you have to write, and if you solve the questions from this, so आप easily उसको कर सकते हैं. And जब whenever जब भी आप इसकी reference to context लिखें तो it's very paramount that you have to write that is the central theme at the end of the explanation. The central theme is the immortality of the true love, which transcends death itself. Okay, then he says that they will not be given special protocol in heaven. The life of this world is a better where they are kings as well as a subject of exceptional and safest kind. So they should refrain from all kinds of fear. यानी कि हमें सब चीज़ों से निकल जाना चाहिए, fear से, खौफ से, and love each other until they reach the average age of 60. यानी कि वही बात है कि वो जब 60 साल तक की उम्र तक भी पहुँचते तब भी मोहब्बत करते रहना चाहिए. Okay, here's the Urdu ट्रांसलेशन. यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस. और यहाँ पे मैंने कुछ मेंशंस किया हुआ है. डैट इज़ द टोन इसकी पैशनेट है, पॉजिटिव है, हम्बल है, काम है. एंड okay, there is some lines opposites of immortalities and death are here and juxtaposed and recognized, and he wrote simple and very direct manners. He writes, okay, now let's start. Okay, let's start the text. I'm going to zoom it so it's very easy to, I think ये easily नज़र आ जाएगा. फिर आप उसमें से यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उर्दू ट्रांसलेशन के लिए. Okay, the anniversary text. All kings and all their favorites. तमाम बादशाह और उनके जो पसंदीदा अफराद हैं. All glory of honors. तमाम जो शानदार है, इज़्ज़त है. ब्यूटीज़, हुस्न जमाल. एंड विट्स मीन अक्लमंदियाँ जो हासिल करते हैं.
सो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि नाउ ऑल द किंग्स एंड देयर फेवरेट पीपल्स, ऑल द ग्लोरी ऑफ द ऑनर्स, ब्यूटीज एंड वेट्स, इवन द सन इज अ सेल्फी, a sun itself which makes times as they pass, यानी कि अब जितनी भी ये शान शौकत है ताकि ख़ुद सूरज भी जो गुज़रते गुज़रते which makes times they pass is वक्त तख्लीक करता है, it's mean that is generated or to make segment of time, is elder by years now than it was and grown old by 1 years, और एक साल बूढ़ा हो गया है. When though and I first one another saw, यानी कि जब हमने पहली मरतबा एक दूसरे को देखा, तो मीन यू एंड आई, मैंने फर्स्ट टाइम यानी कि हमने एक दूसरे को देखा. ऑल अदर थिंग्स टू देयर डिस्ट्रक्शन ड्रॉ, तमाम चीज़ें तबाही व जवाल की तरफ खींची चली जाती है. डैट ऑल थिंग्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स देयर डिस्ट्रक्शन. ओनली आर लव हेट नो डिके में नो डिस्ट्रक्शन, यानी कि सिर्फ प्यार ही है जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है. सो यहाँ पे अब बट इट इज़ ओनली द लव विच नेवर विल नेवर डिके, यानी कि डिके मीन दैट इज़ द कंपोजिशन इज़ द साइंस वर्ड, इट्स मीन यहाँ पे हम लेंगे डिस्ट्रक्शंस. सो दिस नो टुमारो हेट नॉर यस्टरडे, यानी कि अब यहाँ पे है कि कोई हमारी मोहब्बत का ना कोई आने वाला दिन है ना कोई गुज़रा हुआ. रनिंग इट नेवर रन्स फ्रॉम अवे, और हर वक्त दौड़ता रहता है लेकिन हमसे दूर नहीं भागता. रनिंग दौड़ता रहता है, इट नेवर रन्स फ्रॉम अस अवे, लेकिन हमसे दूर नहीं भागता. अब मैं इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी सी पढ़ रही हूँ. और लव इज़ बियॉन्ड द पैरामीटर्स ऑफ टाइम एंड हैज़ नो टुमारो यस्टरडे. तो टाइम कीप्स रनिंग अवे येट इट नेवर रन्स अवे फ्रॉम अस, but truly keeps in his first, last and everlasting day. और बल्कि एक लाजवाल दिन की तरह इसके आखिर और अव्वल में भी कोई फ़र्क नहीं होता. but truly keeps the first, अव्वल, एंड लास्ट, आखिर, everlasting day में, यानी कि इसके लाजवाल दिन की तरह इसके अव्वल और आखिर में भी कोई फ़र्क नहीं होता. that it makes no differences between a starting point and ending point. अब हियर सम यहाँ पे है कि लव इज़ अ परमानेंट फीलिंग्स, इट हैज़ नो पास्ट एंड द फ्यूचर. सो यहाँ पे एक पैराडॉक्स सिचुएशंस जो है वो शो हो रही है इट्स लाइन्स में. अगर यहाँ पे आपको लाइन है, यू मस्ट हैव टू मेंशन दैट इन दीज लाइन्स द राइटर शो द पैराडॉक्स दैट इज़ लाइन्स शोज इन दिस लाइन्स. पैराडॉक्स दैट इज़ जो हमारी एक सीक्वेंस आती है पैराडॉक्स है, ये भी हम एक लेक्चर में इंशाल्लाह उसको सारा स्टडी करेंगे. Okay, the next is you can also take a screenshot from this and read the stanza number 1 in Urdu and in English translation. So the next is, अब जी किस चीज़ की बात हो रही जी, ग्रेव्स आ गया जी. 2 graves must hide thine and my corpse, यानी कि मरने के बाद हमें 2 अलहदा कब्रों में दफना दिया जाएगा. If one my death were no divorce, यानी कि अगर हमें एक ही कब्र में दफना दिया तो हमारे मरने के बाद भी मौत हमें अलहदा नहीं कर सकती है. Like after that we would be buried in 2 different graves. If we were buried in one grave, even death could not separate us from, यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि राइटर जो है वो किस चीज़ को चैलेंज कर रहा है कि यहाँ पे चैलेंजिंग मूड में है. यू कैन ऑल्सो बी राइट द राइटर शो सम चैलेंजिंग मूवमेंट. सो बट अब यहाँ पे है कि जी इवन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. So alas, okay, the next line is that alas as well as our other princes we. अब यहाँ पे अब थोड़ा प्रिंसेस के लेकिन अफसोस दूसरे शहजादों की तरह हमें भी, यानी कि हु प्रिंसेस इनफ इन वन अनदर भी, हमें भी जो है मस्ट लीव एट लास्ट इन डेथ दीज आईज एंड ईयर्स, हमें भी एक दिन मरना है. ईयर्स एंड आईज हमारी आँखों को, कानों को, एंड ऑफन फेड विद ट्रू ओथ्स, और जो हम कस्में हमारी है, एंड विद स्वीट सॉल्ट टीयर्स, और हमारे जो आंसू है
यानी कि हमारी आंखों कानों जो अक्सर मोहब्बत की सच्ची किस्में और शीरी व नमकीन आंसू पर पलते रहे को भी बेजान होना ही है। यानी कि everything, our eyes, ears, which are often nourished, which true oath and sweet saltish tears would stop functioning, यानी कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाना है। बट सोल्स वर नथिंग डेवल्स, यानी कि जो हमारे रूह हैं, अब देखिए ना, इंसान तो ख़त्म हो जाता है, इंसान की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक जो उसकी रूह है ना, वो वहाँ पे यहाँ पे ये कह रही है कि रूहें जिनमें सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं है, just but love, just all other thoughts being inmates, and then shall prove this, or love increase there above, और इसको साबित करेगी, यानी कि हमारे रूहें जिनमें सिवाय मोहब्बत की कुछ भी नहीं होता, इस मोहब्बत को साबित करेगी कि फिर आसमान पर जाने के बाद बढ़ने वाली मोहब्बत साबित करेगी। इंक्रीज देयर अबव, यानी कि आसमान में जाने के बाद वो साबित करेगी। When bodies to their graves, souls from their graves remove, और जब हमारी जो कब्रों में से दफन कर दिया जाएगा और रूहें जिस्मों से निकाल दी जाएगी, यानी कि ग्रेव रिमूव, यानी कि कब्रों से जो है वो रिमूव, हमारी जो अंदर की सोल है वो कब्रों से निकाल दी जाएगी। So it would be when our bodies would be buried in the graves and the soul will be removed away from the bodies. अब देखिए, बॉडी तो उसी के अंदर वो कह रहा रहेगी, लेकिन जो हमारी रूह होगी जिसमें मोहब्बत है, एंड द लव इज़ एवर लास्टिंग, यानी कि नो बडी इवन टू रिमूव द लव फ्रॉम योर सोल एंड फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है, वो आपकी नहीं करेंगे, निकाल नहीं सकता कोई भी। Here the Urdu translations of stanza 2 and the stanza, and in English translation you can read it from this page and you can easily take a screenshot. Okay, now the last, and then we shall be thoroughly blessed, और जब हमें बहुत सी नेमतें मिल जाएगी, यानी कि ब्लेस हो जाएंगे हम, बट वी नो मोर देन ऑल द रेस्ट, लेकिन कोई खुसूसी ऐसी नहीं कि जो रूहें जैसे आम सलूक किया जाएगा। And then we shall be absolutely blessed, yet we will not be given a special protocol. And here upon earth we are kings, and none but we can be such kings, not of such subjects be. अब यहाँ पे वो अब एक किंग को एक बता रहा है कि जी यहाँ ज़मीन पर हम बादशाह है, और हमारे सिवा ना तो कोई बादशाह, ना ही हमारे जैसी कोई रियाया बन सकती है। एंड नॉट वी कैन बी सच, यानी कि हमारे जैसा कोई बादशाह नहीं बन सकता है। नॉन ऑफ सब्जेक्ट भी, हमारे कोई नेशन हमारी जैसी कोई रियाया नहीं बन सकती। हु इज़ सो सेव एज़ वी, और जैसे कि जो कि हम जैसी महफूज है। एंड वे नन कैन डू ट्रेजन टू अस, और हमसे कोई गद्दारी नहीं कर सकता है। ट्रेजन गद्दारी कैन एक्सपेक्ट वन ऑफ अस टू, और हम दोनों में से किसी एक के, यानी कि जहाँ कोई भी बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत नहीं कर सकता सिवाय हम दोनों में से किसी एक से। सो ट्रू एंड फॉल्स फियर्स, जो कि खौफ है, लेट अस रिफ्रेन, इनके ख़ुद से दूर कर देते हैं ना खौफ को। अब इसलिए आओ हर तरह के सच्चे झूठे खौफ बदगमानियाँ से बचे। एंड लेट अस लव नोबली, और हम एक दूसरे के साथ वफादारी से मोहब्बत करें। एंड लिव, और ज़िंदगी जिए। एंड एड अगेन, और सारा साल तक ऐसा करते रहे। ईयर्स एंड ईयर्स अनटू 1 ईयर्स तक, टिल वी अटेन, जब तक हम हासिल ना कर सके, यानी कि अब वो कह रहे कि सारा साल तक हम इतनी मोहब्बत करते रहे, हत्ता कि टू राइट 3 स्कोर, यानी कि दैट इज़ 60, दिस इज़ द सेकेंड ऑफ आर रेन, यानी कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह होने की वजह से आज हमारी बादशाहत के दूसरे साल का पहला दिन है। अब ना वो यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि इसी तरह वो एंड में ये कहता है कि हमारी मुलाकात जो है वो सालगिरह है होने की वजह से आज हमारी बादशाहत के दूसरे साल का भी पहला दिन है। So till we reach the average of the 60, being the first anniversary of our meeting today is the start of the second year of our, जो कि हमारी हुकूमत है या हमारी बादशाहत का as a king. So here's this one is the anniversary. This one is a Urdu translation. अगर इसमें शॉर्ट है तो यहाँ पे आप यू हैव टू, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाता है इस पोइम में से, सो थीम यहाँ पे क्या बन रही है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि थीम जो है वो है पावर ऑफ लव, पावर ऑफ ट्रस्ट विद ईच अदर। सो यानी कि ये पावर है कि ये लव इज़ द एवर लास्टिंग है, नो बडी कैन स्नैच और रिमूव द लव फ्रॉम योर इनसाइड, फ्रॉम योर हार्ट।
सो ये सारी चीज़ें इसमें थीम में आपने यू हैव टू हाईलाइट कि लव इज़ अ परमानेंट फीलिंग्स एंड इट हैज़ नो पास्ट, no matters how much time you have in your life, just to go through it and just to make sure that you if you love with someone, so it's from your soul, यानी कि आपकी सोल है, आपकी रूह है. सो यहाँ पे उसने अपनी एक और यहाँ पे थोड़ी सी राइमिंग जो स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज़ AABBCCDDEE, ये एक राइमिंग स्ट्रक्चर है इसकी बनती है इस पोइम की. और इसमें ड्रामेटिकल लिरिक्स है. यू हैव टू मेंशन दैट इट इज़ अ ड्रामेटिकल लिरिक इन विच द पोएट सेलिब्रेट हिज लव विच इज़ नाउ एंड 1 years old. होप यू आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी इन योर माइंड, यू कैन आस्क फ्रीली टू मैसेज me inbox me, and like and subscribe my channel. Thank you so much. Inshallah, I will upload the more poems of John Donne and the different topics of that is related to the masters level and English literatures, drama, novel, prose, and other more. Inshallah, I will upload it very soon. Thank you so much.